from Motilal Oswal Investment Advisors Limited. And we also have Mr. Surya Modali, Director Investment Banking from Nuama Wealth Management Limited. Without much ado, I'd like to invite Mr. Tanmay Jagdale, AVP ECM Syndication for Motilal Oswal Investment Advisors Limited to make the opening. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for taking your time today afternoon to be here for the press meet of Sambhv CEOs. Without spending a lot of time on introducing the management, I'd like to take a couple of minutes to just speak about the company before we get into the presentation. We're quite proud to get this company to the markets. Founded in 2017, this is a company which is quite young but is doing a lot of big things in the country. It is one of the key players in the Indian steel industry, specializing in the manufacturing of ERW steel pipes, structural tubes. What sets Sambhv Steel apart from the rest of the pack is its unique capability as the only companies in India with a single location backward integrated manufacturing facility. This spans the entire breadth of the value chain from the raw materials to the finished products. The strong process innovation execution capabilities, of course, are impactful and have got them very well. Under the guidance of Bijlal sir, Suresh sir, and Vikas sir, Sambhv Steel has emerged as one of the leading manufacturers of high quality products in India. The company has achieved exemplary growth and has demonstrated the highest standards of corporate governance. Just to give a little bit of background about the transaction, this is a 540 crore issue. This is a 440 crore primary and 100 crore secondary issue. The deal is priced at 77 rupees at the lower end and 82 rupees at the upper end of the price band for equity share. The issue opens for subscription on Wednesday, 25th of June, and closes for subscription on 27th of June, which is the next Friday. The listing is expected to be on the 2nd of July. With that, I'll hand it over to Vikas ji to take it forward. Thank you. Thank you, Tanmay. Thanks to all of you. Yeah. We are manufacturing structures, tubes and pipes, जो कि आपके हर आम जिंदगी में हर जगह आपको देखने मिलता है, जैसे कि एयरपोर्ट्स, रेलवेज, मेट्रो, जो रोड के किनारे रेलिंग्स, लाइट लैंप्स, पीवी स्ट्रक्चर्स, सोलर फ्रेम्स, रेलवे के जो आज नए स्टेशन बन रहे हैं वो, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स, जो भी अब नई फैब्रिकेशन हो रही है किसी भी उसमें, तो वो उसमें आपको पाइप होलो सेक्शन स्ट्रक्चर ट्यूब जरूर देखने मिलेगा। तो वो सब हम हर जगह अवेलेबल हैं। हम सारे एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट, जोधपुर एयरपोर्ट, नवी मुंबई एयरपोर्ट, सब में हमारा माल सप्लाई हो रहा है। जियो टेलीकम्युनिकेशन टावर में हम माल सप्लाई कर रहे हैं। ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड जितने OEMs हैं, जैसे फरीदाबाद में जो मारुति की, आइसर की जितनी फैक्ट्रियाँ हैं वो हमसे माल ले रही हैं। जो डीलर्स हैं, लोहा डीलर्स बॉम्बे में, वो हमसे माल ले रहे हैं। तो जहाँ भी क्वालिटी पैरामीटर्स की ज़रूरत है वहाँ पे संभव अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, और जितने बड़े ब्रांड अवेलेबल हैं मार्केट में उनके बराबर का प्राइस भी ले पा रहा है। बट डिफरेंस हमने कुछ नया क्रिएट किया है, कुछ एक नया हीरा बनाया है, वो आपको मैं समझाना चाहता हूँ। हमने जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है इस पाइप एंड ट्यूब को बनाने के लिए, वो की है नैरो बिट HR कॉइल से अपना पाइप बनाना, जिसके लिए हम अपना HR कॉइल भी खुद ही बनाते हैं। और दूसरे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जितने ब्रांड आपको सुनने मिलते हैं ट्यूब पाइप में, वो सभी बड़े स्टील प्रोड्यूसर से HR कॉइल खरीद के उसको सिलेक्ट करके उसके पाइप, उसके ट्यूब स्ट्रक्चर ट्यूब पाइप को आगे फॉरवर्ड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बट हम हमारा HR कॉइल खुद ही बनाते हैं, जो कि जो दूसरे बड़े देश जहाँ स्टील का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वहाँ पे पाइप एंड ट्यूब इसी तरीके से बनता है। इसमें हमारी जो HR की नैरो बिट की मिल है और जो वाइडर बिट की मिल बड़े प्लांट में लगाई हुई है, उसकी कैपिटल कॉस्ट में काफ़ी हमको फर्क पड़ जाता है। जब हमको पाइप ट्यूब ही बनाना है और जिसका 7 इंचेस तक का 90% का मार्केट है, तो वो क्यों हम बड़ी कॉइल को काट के बनाएं। इसी उद्देश्य से हमने ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, और आज हमने ये प्रूव भी किया
कि हम जो उससे मटेरियल बना रहे हैं वो उसी क्वालिटी का है जिस क्वालिटी से HR कॉइल का मटेरियल बनता है, और उसी प्राइस में और पूरे इंडिया में हम उसको माल को बेच पा रहे हैं। और सेकेंड थिंग और ये है कि जो HR कॉइल के लिए हमने स्लैब जो की ज़रूरत है वो भी हम खुद बनाते हैं। स्लैब्स के लिए जो हमको स्पॉन्ज आयरन एंड पावर की ज़रूरत है वो भी हम खुद ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। पावर हमारे यहाँ इन हाउस 55% ऑफ आवर यूज पावर हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें कि हमारी कोई बाहर से तो फ्यूल नहीं खरीदना पड़ता। लेकिन लगभग 16 मेगावाट हमारा जनरेट हो जाता है WHRP के थ्रू एंड 9 मेगावाट थ्रू AFDC, जिसमें हम हमारा डोला चार्ज जो है, जो हमारे स्पॉन्ज आयरन का बाय प्रोडक्ट है, उसको हम यूज़ कर लेते हैं। और स्पॉन्ज आयरन जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको हम खुद बनाते हैं। अब आइए हमको स्पॉन्ज आयरन बनाने के लिए क्या चाहिए, तो वो हमारा बेसिक रॉ मटेरियल जो हम बाहर से खरीदते हैं, दैट इज कोल एंड आयरन ओर। कोल की भी कैपेसिटीज कोल इंडिया ने बहुत स्पीड से अभी ड्रास्टिकली बढ़ाई है पिछले 2 सालों में, एंड मर्चेंट माइंस भी काफ़ी ऑप्शंस हुई हैं जिससे कि कोल की अवेलेबिलिटी इंडिया में बढ़ी है। और इन टर्म्स ऑफ आयरन ओर में भी जो नवरत्न कंपनी है छत्तीसगढ़ में, जो हमसे 200 किलोमीटर की दूर है, उसने भी अपना प्रोडक्शन 35 मिलियन से 45 मिलियन टन किया है, और गोइंग फॉरवर्ड 5 सालों में 90 मिलियन टन करेंगे। तो आयरन और भी बहुत आयात में हमको अवेलेबल होगी। अब दूसरा पार्ट है जो आयरन ओर का, आयरन ओर फाइन्स, जो पहले हमारे इंडिया में यूज नहीं हो पाता था, लेकिन जब से पैलेटाइजेशन की फैसिलिटी इंडिया में लगने लगी और बड़ी लार्ज स्केल में लगी, तो वो सारा फाइन्स हम यूज़ करके आयरन ओर में कन्वर्ट कर रहे हैं, आयरन ओर पैलेटाइजेशन के थ्रू। इसकी कैपेसिटी अभी 165 मिलियन टन की है और प्रोडक्शन लगभग 105 मिलियन टन का है। आप देखेंगे इंडिया का टोटल प्रोडक्शन 130 मिलियन टन का फिनिश प्रोडक्ट है, और उसके लिए हमारे पास में आयरन ओर काफ़ी मात्रा में अवेलेबल है। तो इस तरीके हम सिक्योर हो जाते हैं आयरन ओर पे। तो आयरन ओर से हमने हमारी पूरी जितनी फिनिश क्वांटिटी है उसके लिए स्पॉन्ज बनाया, देन हमने उसको स्लैब्स में कन्वर्ट किया, देन हमने उसको HR में कन्वर्ट किया, और ट्यूब एंड पाइप बना के हमने मार्केट में सेल किया। तो लोकेशन हमारी बहुत बड़ी एडवांटेज है छत्तीसगढ़, और लोकेशन का एडवांटेज सिर्फ रॉ मटेरियल में नहीं है, फिनिश में भी है। हम फिनिश सेंट्रली लोकेटेड होने के कारण पूरे इंडिया में माल भेज पाते हैं, और हमारी कॉस्टिंग कम होने के कारण हमको उसके फ्रेट कॉस्ट का भी बेयर हमको बहुत आराम से हम कर पाते हैं। कोई और बाहर माल बनाएगा तो वो रॉ मटेरियल यहाँ से लेके जाएगा, हम फिनिश ही ट्रेवल कराते हैं। आज हमारे पूरे ऑल इंडिया हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू काम कर रहे हैं। मेजर मार्केट हम बोलेंगे तो हमारी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये मेजर मार्केट्स हैं। बाकी जम्मू तक हम माल भेज रहे हैं, बेंगलोर तक हमारा माल जा रहा है, डाउन साउथ छूट रहा है अभी थोड़ा सा, और ईस्ट में हमारा जो 7 सिस्टर है वहाँ माल नहीं जा पाता। तो इतनी कैपेसिटी हमारे पास में, हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं उसको। आज कैपेसिटी इतनी नहीं है कि हम सब जगह सर्व कर पाए। कुछ क्वांटिटी हमने पीछे एक्सपोर्ट भी की है, लेकिन अभी हमारा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको डिस्ट्रिक्ट को आ रहा है, हमको दिक्कत आ रही है कि हम माल दे नहीं पा रहे सभी लोगों को। और डिमांड के रूप में पाइप की डिमांड हर जगह पे है, क्योंकि धीरे धीरे इंडिया में भी इंजीनियरिंग थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड हुई है, अच्छी हुई है। तो जो कन्वेंशनल स्टील हम यूज़ कर रहे थे, भारी स्टील यूज़ कर रहे थे, उसकी जगह होलो सेक्शन में सब कन्वर्ट हुए हैं, और वो आपको देखने को मिलता होगा हर जगह आपके आसपास, एयरपोर्ट्स वगैरह में। बाकी आगे की जर्नी चेयरमैन साहब से बोलूँगा कि मैं जो हमने नया चैलेंज हमने एक्सेप्ट किया, थोड़ा इनके लिए बता दूँ कि 20 साल का हमको एक्सपीरियंस है स्टील मैन्युफैक्चरिंग का, और चेयरमैन साहब का बहुत फोकस रहा है इनोवेशन पे, टेक्नोलॉजी पे और क्वालिटी पे। तो हमने उसके लिए ही हमने इस तरीके का प्रोडक्ट हम मार्केट में मतलब हम इस तरीके का प्लांट लगा पाए और प्रोडक्ट बना पाए, और भी हमने नए नए प्रोडक्ट बनाए हैं लास्ट ईयर। तो चेयरमैन साहब थोड़ा उसके मैं आपसे पहली बार मुखातिब होकर ये बताना चाहूँगा, जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन के बारे में हमने आपसे कहा, उसके बहुत सारे हमको बेनिफिट मिलते हैं। बेनिफिट ये मिलते हैं कि हम अपनी सप्लाई चेन को मैनेज कर पाते हैं, हम अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचने की ताकत रखते हैं, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन होने के कारण हमारी स्लैब भी हम खुद बनाते हैं, पावर भी खुद बनाते हैं, और HR के प्रोडक्शन भी हमारे खुद के हैं। तो जो साइज चाहिए, जो उनको आप इन टर्म्स ऑफ थिकनेस चाहिए, वो हम आसानी से अवेलेबल करा पाते हैं। तो हम अपनी सप्लाई चेन को बहुत अच्छी तरह मैनेज कर पाते हैं, और हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स होते हैं उसके अंदर में, जिनके द्वारा हम ये आप कह सकते हैं कि हर स्टेप का प्रॉफिट भी हम
हमारे ऐड करके, और जब हम पूरी प्रॉफिट की बात करते हैं तो सारे सिस्टम का प्रॉफिट जो है हम फिनिश पे ले पाते हैं। और अब मैं बात कर दूँ जैसे विकास ने कहा इनोवेशन की, यस संभव लगातार इनोवेशन कर रहा है। हम इनोवेशन में और हमारी जो टीम है, जो हमारे पास 20 साल का अनुभव है, टीम का भी अनुभव 20 साल का, क्योंकि हमारे पास सभी बहुत पुराने साथी हमारे जुड़े हुए हैं। तो उस अनुभव के तहत हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, जिसके तहत हमने नैरो स्ट्रिप HRV लगाई, और आगे अब हमने GP के विषय में भी देखा। हमने प्री गैल्वेनाइज पाइप का भी डोमक्स टेक्नोलॉजी से हमने उत्पादन शुरू किया, और ये मुझे बताते हुए गर्व है कि हम उस पाइप के प्राइस भी जो मार्केट में हैं वो हमारे बड़े ब्रांड्स के अनुसार ले पाते हैं। और अब एक छोटी सी बात जो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग थी, बट कि स्टेनलेस स्टील बनाना, और हमने एलॉय की दुनिया का नीश प्रोडक्ट, जिसके अंदर में आप कह सकते हैं कि बड़ी मात्रा में एलॉय होता है और थोड़ी मात्रा में स्टील होता है, वो हमने बनाया और वो सक्सेस किया। हमने अपने प्लांट के अंदर में इनोवेशन किया, और बहुत सारे बाउंड्रीज हैं, बहुत सारी उसके अंदर में चीज़ें हैं जो लोग इस प्रोडक्ट में नहीं आ पाते हैं। हमने उन सब बाउंड्रीज को पार किया, और आज हमने स्टेनलेस स्टील का उत्पादन शुरू किया है, और हम अच्छी मात्रा में स्टेनलेस स्टील बढ़िया क्वालिटी की सर्व कर रहे हैं। और बात है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हमने जो नैरो स्ट्रिप मिल लगाई है, वो आज हर तरीके से, चाहे आप गेज की बात करें, चाहे आप थिकनेस की बात करें, चाहे आप विड्थ की बात करें, वो पूरी तरह से हमारे पैरामीटर जो हम जो बनाना चाहते हैं, जो HR पाइप के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं, बी स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं, वो कर पा रहे हैं। और बात जब आती है कि हम अब क्या करने जा रहे हैं, तो हमारी थर्ड यूनिट के अंदर में हम 1.2 मिलियन टन का प्लांट लगाने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट फेज जो है हम दिसंबर 26 तक पूरा कर लेंगे। उसके लिए हमने मिल इंपोर्ट की है और हमने लैंड एक्वायर कर ली है। ये एक जो फ्यूचर के अंदर में हमारी जो प्लानिंग है उसका हिस्सा है। और बात रही भारत की ग्रोथ की और हमारी ग्रोथ की, तो भारत की ग्रोथ जो है वो लगातार ट्रेमेंडसली बढ़ रही है। अब भारत लगातार ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि इसमें संभावनाएं बहुत हैं, और संभावनाएं जहाँ पे हैं वहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि सब संभव हो सकता है। तो हम भी उसी दिशा में काम कर रहे हैं और अपने संभव के प्रोडक्शन को उस दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं, जिस दिशा के अंदर में भारत का विकास और संभव का योगदान वहाँ पे हम देखते हैं। और बात करते हैं हम स्टेनलेस स्टील में भी हम अपने क्वालिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, और हम लगातार नए प्रोडक्ट भी उसमें नई ग्रेड भी ऐड कर रहे हैं, और जैसे 316 की ग्रेड भी ऐड कर रहे हैं, 304 की ग्रेड भी ऐड कर रहे हैं, और आपको फ्यूचर में हम बेहतरीन ग्रेड के साथ में अवेलेबल हो पाएंगे। अब मैं तो मैं माइक देता हूँ, वो अपनी बातों को रखें। Thank you, sir, and thank you everyone for taking out time and coming today. So we have a quick presentation for you all. We'll start with the presentation. We announced the pipeline today, and the issue would be opening from 25th of June till 27th of June. So this is a brief summary of Sambhv. We started our operations in 2018, and today we have a single location integrated setup for pipes and tubes manufacturing. So currently we are operating two manufacturing units. Unit 1, which is a flagship unit that is located in Sarora village in Raipur, and Unit 2 that is in Uttare village, that's also in Raipur. And as of today, we have a total installed capacity of around 1.7 million tons. This is including all intermediate and finished products.
Finished product for us is pipes and tubes, as we said, and that is applied to different industries. So some of the major industries that we cater to are housing and infrastructure, agriculture, automobiles, telecommunication, oil and gas, and even solar sector. The solar module mounting structures are made of pipes and tubes, which will supply to that sector also. And these are some of the key financial and operational highlights for FY24. In FY24, we did a top line of around 1285 crores with an EBITDA of 160 crores and a PAT of 80 crores. On the per ton margins for FY24, the EBITDA per ton was 7,100 rupees per ton on a blended level. And on the working capital cycle for FY24, the working capital days were 41 days, which is like the second best in the industry if we compare amongst all our peers. On the operational metrics, till FY24, the final product was just pipes and tubes for us. The capacity of that was 350,000 metric tons. And we majorly sell through distributor and dealer network. And as of last year, we had 39 distributors spread across India and a network of more than 600 dealers. And on the human capital, we had around 1,200 employees in our payroll in July 24. In the next slide, I'll give you the updated numbers for FY25 as well. So these are the key numbers for 9 months of FY25. In the 9 months of FY25, we achieved a top line of around 1,016 crores, an EBITDA of around 106 crores, and a PAT of around 41 crores. And on the operational side, we commissioned our unit 2 in the first 9 months of FY25. So now the production capacity for our finished product is 350,000 tons of pipes and tubes, 1 lakh tons of GP pipes, and 58,000 metric tons of stainless steel coils. And on the distributor network, we have grown our distributor network to 43 from 39 last year. And dealer count has increased to more than 700 dealers across India. And on the human capital, as we are growing, now our payroll, in our payroll we have more than 1,700 employees as of March 25. Then, as you know, we have 3 broad segments of our finished product. On the first value chain, ERW pipes and tubes. So for that, we have a complete integrated setup. So we start with manufacturing of sponge iron. We captively consume that sponge iron to manufacture slabs. From that slab, we manufacture HR coil, and from that HR coil, we are manufacturing pipes and tubes. And also, as a value addition, we also manufacture GI pipes. And again, one other value-added product for us is steel door frames. Now, this door frame is also something that only a few players in the industry are manufacturing amongst our peers. Then the second product line for us is GP coils and GP pipes. Again, we have a complete integrated setup for that as well. So the production process again starts from sponge iron. From that, we manufacture slabs. From slabs, HR coil. Now we have an additional step in this. We do cold rolling of that HR coil. And from that CR coil, we galvanize that coil to manufacture GP coil. And from that GP coil, we are manufacturing GP pipes. So this is the production value chain for GP pipes. And on the third segment, we have stainless steel. So just like our 2 other products, again we have a complete integrated setup for this. We have AOD installed in our plant. So we manufacture stainless steel liquid metal. From that, we manufacture slabs, stainless steel slabs. From that, stainless steel HR coil. And as a further treatment to it, we do annealing pickling of that coil. And the finished product is cold rolled coils. Stainless steel cold rolled coils. Then this has been the journey for us so far. So we started in 2018 with a just sponge iron unit. In 2019, we expanded the capacity of our sponge iron unit. In 2020, we commissioned our power plants and also set up furnaces for manufacturing slabs. Then in 22, we started manufacturing HR coils. And FY23 was the year when we started manufacturing pipes and tubes. Then in 24 again we expanded some of the capacities, and in FY25 we concluded our major capex program, wherein we expanded the capacities of all our intermediate and finished products and also started manufacturing GP pipes and stainless steel coils. Now next is to talk about our key strengths. So these are the key strengths that we are operating with. So first is our backward integrated setup. Now, as I mentioned that backward integration helps us in a lot of ways. Like, since we control our production value chain, so we are in a better position to
supply any customized products or any kind of product to our customer at a much faster rate. So the lead time gets reduced. Then the other benefit is that the quality becomes very consistent because we manufacture our own HR coil rather than buying from the market from different suppliers. Then the next strength for us is our geographical location. So again, since we are backward integrated, the raw material for us is coal and iron ore. And the mines of both of these raw materials are in very close proximity to our plant. So the raw material procurement gets easy. And also, Raipur comes in a central region. So we are centrally located and the availability of heavy vehicles is very good. So the distribution of finished product also becomes very easy. And that can be seen from our distributor network also. So that I'm coming to that. So next strength for us is our distribution network. And as I mentioned that we started manufacturing pipes in FY23 only. And within a span of just 2.5 years, we have been able to create a network of 43 distributors and a network of more than 700 dealers spread across India. And as of today, the major markets for us is Maharashtra and Gujarat, and of course other states like MP, Rajasthan, Haryana, Chhattisgarh that also we cater to. Then the next strength is our process innovation and our execution capability. Now we mentioned that we manufacture our own HR coil, and the quality of that HR coil we have been able to achieve at par with those of primary producers. So that's one of our main capability. And apart from that, we are also amongst a very few companies in India to manufacture stainless steel coils. Then we also have the capability to produce alloy steel. So we have metal refining furnace in our plant. And we also, we have tried out cotton steel pipes. So these pipes are used in containers manufacturing, containers which are used in marine transport. So we do have the capability and we are evaluating further products. And fourth on this is our captive power plant, which we have spoken about. So these power plant currently fulfills around 55% of our power requirement for unit 1. Then the next strength for us is the industry demand. So I'll move on to the next slide. So if we see the steel industry of India, it's growing at a rate of 7% against the global average of 2%. And if we specifically talk about pipes and tubes industry, it's growing at around 9 to 10%. So there is a lot of headroom to grow, and on the similar lines, we are also expanding our capacities to cater to that growing demand. Then next is our promoter and the management team, and as we mentioned that we have experience of more than 2 decades in the steel industry. So we understand the business very well and know the nitty-gritties of the business. So that helps us. And next is on the financials. So if you look at the financial numbers for the last 3 years, everything has been growing at a very good rate. So the revenue has grown at a CAGR of 25%, gross profit has grown in percentage terms as well as in absolute terms. EBITDA has consistently grown in absolute terms. And PAT has grown at a CAGR of 7% in the last 3 years. Debt ratios have improved quite a bit. Working capital days has continuously improved, and it's in FY24 it was at 41 days. Then this is the production process. We have already covered that in our slide. So raw materials are iron ore, coal and iron ore pellet. From that we manufacture sponge iron. From sponge iron slabs to HR coil, HR coil to ERW pipes. Similarly, in GP up to HR coil is same. We do cold rolling of that HR coil, galvanize it and make GP pipes. And stainless steel again we have AOD where we